Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। मैम थोड़ी देर वेट करें कि स्टार्ट करना चाहूँगी। आई थिंक स्टार्ट करिए अपन। ओके, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय भीम। आज वैशाली मैम डाइजेशन सिस्टम पर आपका टॉपिक लेने वाली है। तो लास्ट टाइम एक्चुअली बहुत स्टूडेंट्स कम थे, तो इस वजह से हम फिर से वो क्लास ले रहे हैं। अगर आपको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो, इशू हो टॉपिक में या फिर कोई पोर्शन नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप पूछिए क्लास होने के बाद में। सो वृषाली मैम, आप अपना सेशन स्टार्ट करिए। थैंक यू। थैंक यू। ओके, जय भीम एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हम पहले एक शॉर्ट रिव्यू लेंगे ऑफ आवर लास्ट क्लास वेरिन हमने डाइजेशन क्या है देखा था। Let's see what exactly the term digestion means, which is breakdown of the food which we eat into a simple form. मतलब जो complex food हम खाते हैं that is broken down into simple form, that is called as digestion. Now the entire process of digestion, पूरा digestion process carry किया जाता है from our alimentary canal. So our alimentary canal starts from our mouth, then it continues with the esophagus, stomach, then we have our large and small intestine, then it ends at anus. So you have to remember that alimentary canal will start from mouth and anus तक खत्म होगा. Okay, so starting with the mouth को हम divide करते हैं into two things. Okay, that is buccal vestibule and oral cavity. Now if you see this diagram, yeah, here the entire cavity, ये cavity आप जो देख रहे हैं, this is called as oral cavity. But vestibule की बात हम जब करते हैं, vestibule is a space between teeth and gums. Okay, the space, if you press it like this, if you press the lower part of your cheeks, then you will feel that soft tissue here. That is your buccal vestibule. Okay, sometimes food will go and accumulate here, so that area is called as buccal vestibule and oral cavity. Okay, now oral cavity को हम और divide करते हैं into teeth and tongue. Sorry. Okay, so the characteristic of teeth, the teeth which we persist or the teeth which we have, which vertebrates have, they have certain characteristics. तो ये जो चार चीज़ें हैं, we need to understand this, what exactly is thecodont. अगर if I'm drawing a diagram of human teeth here, okay, so this is the root and here we have our gums. So what is this? Our almost half portion of teeth or the roots are enclosed with this thick covering. So that is called as thecodont. If you divide this term, this is thick, this is your teeth. So your teeth is covered with this thick area, that is your gums, that is thecodont. Now when we talk about diphodont, di is two, okay, that means the teeth has two phases of life. Okay, so what are those two phases? One will be the primary phase, that is the milk teeth. Okay, milk teeth, and the another one will be permanent teeth. Fine, so that is diphodont. So diphodont की characteristics कौन से teeth में होते हैं? If you all remember, we have incisors, canine, premolars and molars. So diphodont characteristics will be taken up by incisors, canines and first and second what? Molars. Okay, fine. Then comes heterodont. What is the term heterodont meaning? अगर हम हमारे
entire structure देखेंगे of teeth. So the initial teeth, that is the incisors, they are little flat. Okay, the teeth which are in front, they are little fat. उसके बाद वाला जो आता है, that is canine, which is little pointed. Okay, these side teeth will be little pointed. Fine. Then after that we have premolars, which will be little softer ends and little smaller, and then we have the molars, which are quite wider. Okay, so our teeth has different structures, that means they are heterodont. Okay, also there are few teeth which are present only in this phase, that is the primary phase, and those are called as monophyodont. Okay, because they carry only one phase of their life. Fine. Now I'll just elaborate little more on the dental formula for you all. Yeah, so we have incisors, canine, premolars, and molars. Okay, so when we talk about adults, adults will have two incisors, one canine, two premolars, and three molars. Okay, then the teenagers will have two incisors, one canine, two premolars, and two molars. Fine. When it comes to children, the number will slightly change. They won't have this part, that is the premolars. So it will be 2102. So if you have to write formula for adults, it will be 2123 by 2123. It will be same for teenagers as well as children. Okay. Now coming to little bit of teeth. When we draw a structure of teeth, okay, so this part is termed as crown. Okay, this part. Then we have the neck. Okay, our gums will start from here, and this is the root part. Okay, so when we talk about crown, crown is basically covered by the enamel, which is the hardest part of human body, which is formed by deposition of calcium phosphate. Okay, remember that, and it is ectomesodermal in origin, very important for your exam. Fine. Then there are two types of roots present, open and close. अगर रूट का ओपनिंग बहुत बड़ा है, then it is called as open root. If it is absent, okay, or it is very small, it is called as closed. Now the importance of this root is that the nerves will pass from here. Okay, so that's why it is important for us. This is the basic orientation. The incisors, as I told you, they are in front. Then we have the canines. Then there is the premolar and the molar group. So the incisors and canines will form what? Anterior arch. Okay, they'll form the anterior arch, and the premolars and molars will form the posterior arch. Fine. Yes, this is the structure of tooth which I had explained to you all. Fine, remember this is crown part, this is root part, and the part intersecting between both is called as neck. Okay. Yes, coming to tongue, which is the soft musculature important for swallowing and forming of bolus. So if we consider the surface of tongue, then it is covered by few structures. Now what are those structures? They are the taste buds, or they are the papillae. The importance of this papillae is कि हमें जो taste sensations आते हैं, they are carried out by these papillae. If I draw a small diagram of a papillae, then okay, so it will have one hair cell. Okay, it will have one hair cell, it will have one nerve root, it will have one nerve root. Fine, and then it will have one blood vessel which will supply.
So the blood vessel का function तो हमें पता है, it supplies nutrition, and the function of hair cell is to detect the transition of food in the tongue, and nerve का function is to carry taste. Okay, so if I draw a rough diagram of our teeth, sorry, if I of our tongue, so there are basically three papillae which you all have to remember. This is the tonsillar part, this area. We'll right now omit that area. Fine. So tonsil के immediate पहले जो papillae आते हैं, this one, they are called as circumvallate. Okay, they are called as circumvallate. Fine. Then there are other papillae which are present only at the periphery of your tongue. जो tongue के outer lining पे present होते हैं, they are called as fungiform. Then the one which are present in center area of our tongue is called as filiform. Okay. Now all these three have their own speciality. When we talk about fungiform and circumvallate, they both are pink in color. Okay. They both are pink as well as they have taste buds. Whereas if we talk about filiform, the ones which are present in center, they are white in color. Okay, and they don't have taste buds. Fine. So you have to remember these characteristic features of tongue papillae. Then there are certain muscles which are again responsible, and we have few glands. Okay, so there is first gland which is the mucus gland, then the second gland is the serous gland, and the third gland here. The components of tongue. First is the mucus gland, which will secrete what the name itself says, mucus. Then there is serous gland, which will secrete serous fluid. और serous fluid में क्या होता है? Serous fluid में होता है alpha amylase. Alpha amylase is important for us for digestion of what? Glycogen. Okay, remember, very important MCQ. Serous fluid secreted by the serous gland consists alpha amylase, which is important for breakdown of glycogen and starch also. Then there are other lymph nodes, which are basically the tonsil, which is that work. The function of lymph node is done basically by the tonsils. Yeah. Coming to esophagus. Now, the esophagus, as we all know, it's a tube-like structure and it has lot of irregular surfaces on it. Fine. So, the opening which is present here, yeah, here is a opening which is called as gullet. Okay, जहाँ से esophagus start होता है. अब या सो ईसोफेगस का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ईसोफेगस लुक्स समथिंग लाइक दिस. ओके, this is the lumen of esophagus. It is very irregular surface. Okay, now if we have to study layers of esophagus, then I'll take this section, okay, and I'll elaborate here. Fine. So I'll start with the outermost layer, which is called as serosa. Why serosa? Because it's a thick fibrous layer. Okay, that's why it is called as serosa. Okay, after that we have another layer which is called as the muscularis layer. Now muscularis layer has two divisions. Okay, पहले तो है उसके longitudinal cells जो हमने बनाए थे यहाँ पर. Okay, उसके बाद आते हैं circular cells. Fine, these are little bigger in size. So this layer is called as muscularis. Muscularis. Okay, then we have another two layers. The one
is what? Submucosa, जो हमने देखा था. This is submucosa. Okay. Then we have another important layer जिसे हम कहते हैं mucosa. Okay. अब mucosa का speciality क्या है? That it has columnar cells which are called as what? Goblet cells. Okay. Now the function of goblet cells is what? To secrete mucus. Fine. So these are basically columnar cells like this. Okay. Then they have a pit here where the mucus gland is present, and that's how it is secreted. So those are the goblet cells. Then we have stomach. Okay. So the stomach का division हमने देखा था that it is divided into fundus, spine, body, and the pyloric area. Okay. So again we had seen that it has two curvatures. This is the smaller curvature, lesser curvature. This is the greater curvature, and there are omentum present. Omentum क्या है? Sheath है, covering sheath है जो stomach को cover करते हैं. So the lesser curvature will have lesser omentum, okay, and the greater curvature will have what? Greater omentum. Okay, and these are the basic divisions of stomach. Now we'll see further. Yeah. So today we'll see the entire parts of gastric content, whatever is there in a gastric content, and how the gastric hormones influence the digestion process, and we'll see small intestine and large intestine. तो जब हम stomach wall की बात करते हैं, stomach wall is what? Stomach wall is covering of muscle. Okay, covering of muscles which are present on the stomach. Just take a minute. Okay, yeah. So the first covering जो मसल पे आती है वो आती है सर्कुलर मसल्स की. ओके, ये आप देख रहे हैं, this one, they are circular muscles. Okay, why? Because they are present in that way. That's why they are called as circular muscles. अगर हम circular muscle को निकालेंगे, what layer will get? We'll get another layer of the longitudinal muscles. Okay, fine. Then after longitudinal muscles, what we get is this oblique layer. Okay. Then inside part, if we cut the stomach into half, what we see is this picture. Up in this, there are canals and folds. Okay, canals are the areas where the food particles will be present and then will be digested. If we talk about gastric fold क्या है? Gastric folds are also called as rugae. Okay, remember this. ये आपको याद रखना है. They are called as rugae. Rugae का function क्या है? Whenever food is entering into stomach from esophagus, it will increase the surface area of stomach. ठीक है, stomach को distend करना होगा to accommodate the food particles. तो stomach को अपनी size बढ़ानी है. So how it will increase the size? ये जो folds है, okay, these are present like this. Okay, inside the stomach, they are present like this. So this is the gastric fold and these are the canals. Fine. So when food is entering inside, we need space for accommodation of food. तो ये flatten हो जाएंगे. Okay, they'll flatten. So इससे क्या होता है? हमारा surface area बढ़ता है. Okay, surface area बढ़ता है. So we can accommodate more amount of food in this. Okay, fine. Then these areas you all know, we had seen in last class also. Fine. As soon as stomach ends, okay, so the end part of stomach is called as pylorus. Okay, it is divided into three parts again. So the initial part is called as the antrum, जहाँ से food again it is pushed towards the canal and then it is pushed towards what? It is pushed towards duodenum. Okay, duodenum is what? Duodenum is our small intestine. We'll come to it later. Yeah. So जैसे हमने we had studied in esophagus also that it has 4 layers. So those four layers are again continue to
the stomach also. So here also you will see the same thing कि यहाँ पर भी सिरोसा है, मस्कुलरिस layers है, then submucosa है and mucosa है. Okay, so the as I told you, the folds are called as rugae and they extend on entry of food to it. Okay, then whenever there is always remember that uh, the yeah, if you all know what is chyme is the breakdown of food. The food is broken down inside stomach, so that entire whatever product is formed, that is called as chyme. Yeah. Coming to mucosa, mucosa is the what innermost layer of stomach और mucosa में होता है gastric mucosa, okay, which consists of what very important structures called as gastric glands. Okay, gastric glands. अब gastric glands का काम क्या है? Whenever food is going to enter stomach, okay, it is reaching stomach, so these gastric glands are going to secrete what? They are going to secrete digestive enzymes. और क्या होता है स्टमक में HCl होता है, ओके, एंड म्यूकस. ये सारे सेक्रेट होते हैं बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. एंड once there is as I told you that the stimulus is needed, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम HCl ये सब सेक्रेट होने के लिए स्टिमुलस चाहिए. सो व्हाट इज द स्टिमुलस? हम जो खाना खा रहे हैं that contains proteins, that contains lipids, carbohydrates, all that. So वो सब सेंस किया जाता है. Here there are certain nerves present which are the gastric innervations. Okay, so they sense the presence of proteins, carbohydrates, lipids वगैरह, and then these digestive enzymes and HCl वगैरह are separated, are secreted. Now whenever there is periodic contraction happening, periodic contraction मतलब एक चीज आपको याद रखनी कि स्टमक कभी भी रिलैक्स्ड फॉर्म में नहीं रहता है. ओके, हम खाना खाते हैं सो इट डज कॉन्ट्रैक्शंस, द गैस्ट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, देन दे reduce their movement for some time, then they again contract. So ये सारे मोशन को हम कहते हैं periodic contractions. Okay, periodic contraction of stomach. So they are very helpful in formation of what? Chyme. Okay, अगर periodic contraction stomach के नहीं होंगे then we won't get chyme. Fine. And if there is chyme formation, then by the movement of peristalsis it is pushed towards duodenum. Fine. अब स्टमक में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा की वजह से ही स्टमक इज द फर्स्ट एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर प्रोटीन्स. Okay, stomach is the first area in digestive system entirely where the proteins get absorbed. Fine. Now if I enlarge this mucosa, this surface, then there are certain structures present on it, so they are basically called as gastric glands and gastric pits. Okay, so when we talk about these gastric glands, they are present in 3 areas. Fine. So yeah, आप यहाँ भी देख सकते हैं. This is gastric pit, then there is gland below that. Okay, and these are the layers जो हमने देखे थे, mucosa, submucosa, muscularis. तो ये जो gland है, अब इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग ही ये प्रेजेंट रहते हैं. ओके, यहाँ पर these gland इसकी बात कर रही हूँ. Okay, so the gastric glands will be present at surface. Okay, and then we will have the pyloric gland and सबसे लास्ट we have the cardiac gland. Okay, now इनका भी लोकेशन स्टमक में चेंज होता है जैसे कार्डियक है. Okay, so if I draw stomach, so this is our cardiac area. Okay, so these cardiac glands are present here. Okay, then the gastric ones are present in this entire middle area. Fine, and then we have the pyloric ones present here. Fine. So gastric basically सबका function यही रहता है कि they form a protective layer and they secrete certain enzymes which are important for
digestion. Now there are certain another cells present, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं. All these cells are important again for secreting some or other enzymes of digestion. We'll see that in next slide. Yeah. So अगर मैं फिर से एक गैस्ट्रिक ग्लैंड का डायग्राम बनाऊँ. ओके, दिस इज द गैस्ट्रिक पिट एंड दिस इज आवर ग्लैंड. ओके, सो जो पैराइटल सेल्स हैं, ये सेल्स थ्रू आउट प्रेजेंट रहते हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम along the entire length they are present. Okay, and the mucous cells, which we say, they are present up here, as the name indicates, mucous neck cells. Then we have the zymogenic cells, which are present at the base. Okay, अब म्यूकस सेल्स का फंक्शन तो हमें पता है कि दे सेक्रेट म्यूकस. ओके, स्टेम सेल्स विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द ग्लैंड ऑन द आउटर सरफेस. ओके, स्टेम सेल का फंक्शन क्या है? समटाइम्स वी गेट एसिडिटी, ओके, और समटाइम्स वी गेट अल्सर. सो दैट टाइम जो हमारी स्टमक लाइनिंग होती है, दैट गेट्स इरोडेड. ओके, सो इरोड होने के बाद यहाँ क्या होता है? सेल डैमेज. So to repair that cell damage, we need this stem cells. So stem cells are going to repair this damage, okay, and they are going to help in healing of the cells. Okay. Now the function of parietal cells is to secrete what? Hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid again, as you all know, that it is important for breakdown of the food particles. And zymogenic cells are important because they secrete pepsin and renin. Okay, pepsin is going to do what? Pepsin हमारा प्रोटीन एब्जॉर्ब करता है. Okay, the name PP याद रखना है आपको. Pepsin will help in digestion of proteins, and renin will help in what? Curdling of milk. Okay, milk when it is exposed to gastric acid, it will become like curd. It will curdle. So that part is done by renin. Okay, yeah. Now coming to very important part again, gastric hormones. ये आपको थियोरी में लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट आंसर में पूछते हैं. ओके, प्लस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू ऑल्सो. सो फर्स्ट हार्मोन है हमारा गैस्ट्रिन. द नेम इंडिकेट्स दैट इट विल सेक्रीट व्हाट? गैस्ट्रिक एसिड. बट व्हेन विल इट सेक्रीट? कुछ तो स्टिमुलस होना चाहिए ना हमें सेक्रीट करने के लिए. सो इट विल सेक्रीट गैस्ट्रिक एसिड when there is presence of peptides in the food. Okay, and what? Presence of amino acid. Only then this gastrin will be secreted. Coming to the next one, that is cholecystokinin, which will secrete what? Pancreatic enzymes, and also it will help in emptying of. Okay, fine. Gallbladder ko contraction and emptying is done by this hormone. Okay, and this will be secreted only in the presence of fatty acids and again amino acids. जब ये एसिड्स प्रेजेंट होंगे या फिर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तब ही रिलेटिव हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं. ओके, फाइन. नेक्स्ट इज सेक्रेटिन. सेक्रेटिन का फंक्शन है कि वो वाटर और बाइकार्बोनेट्स को एब्जॉर्ब करता है. ओके, एंड इट इज सेक्रेटेड व्हेन? वाटर और बाइकार्बोनेट हमें कब चाहिए? जब पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है. ओके, तब हमको वाटर और बाइकार्बोनेट चाहिए. क्यों चाहिए? टू न्यूट्रलाइज. So when will be it secreted? When the acid content is high in stomach. So that time secretin will be secreted. Okay. Next coming to ghrelin. Ghrelin कब secrete होता है? जब हमें when we are very hungry, जब हमें बहुत भूख लगती है, that time ghrelin is secreted. So it's basically called as a appetite hormone. Okay. तो जब हमें भूख लगती है, that time it is very high. Okay, and when we eat food, it normalizes. So ghrelin का function ये है that it will stimulate your appetite. Okay. Then next is motilin. जैसे नाम indicate करता है, it helps in motility of stomach and intestine. Next is the gastric inhibitory enzyme. It will function to
suppress the activity of this gastrin. Okay, अगर गैस्ट्रिन का सेक्रीशन ज़्यादा होता है then also we have what increase in pH. So to normalize that we need a another mechanism. What is that mechanism? That mechanism is this enzyme, gastric inhibitory enzyme. Okay, fine. और ये कब होता है? When we are doing fasting. Okay, जब हम फास्टिंग करते हैं तो you all must be knowing कि हमारा acid level high होता है. Okay, because there is nothing enough food to neutralize the acid content. So that time gastric inhibitory enzyme will come to neutralize this acid. Okay, next is the small intestine. अब आपको याद रखना है कि small intestine is divided into three parts. Okay, small intestine is divided into duodenum, it is divided into jejunum, and it is divided into ileum. Okay, so the first part जहाँ से जैसे ही स्टमक खत्म होता है, here is our, this is the stomach part. Okay, so here our stomach is ending and the small intestine is starting. So this part, the initial part of the what small intestine, the starting part of small intestine is called as duodenum. Okay, so duodenum का function ये है कि it will help in absorption of important water content. Okay, and important the all the salts which are present, that will be absorbed here. Salts, and then there are proteins, all these will be absorbed at the duodenum area. Okay, it is very easy to understand the structure क्योंकि ये बहुत छोटा area है. Okay, it is basically only this much. Okay, the C shaped part. अब इसके अटैचमेंट बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने काफ़ी सारे नाम दिए हैं इसको. ओके, तो उसका जो इनसाइड पार्ट है, दिस कर्वेचर, सी कर्वेचर, इज अटैच टू आर व्हाट, पैंक्रिया. This is pancreas. This is pancreatic tail. This is pancreatic head. So pancreatic head coincides with our what? Inside curvature of duodenum. Okay, fine. Then there are other few vessels also present, but they are not so important for you. So you have to just remember that it is C-shaped. Then the head part of pancreas attaches the lesser curvature of the duodenum. That you have to remember. Okay. One more thing, I think it is going to next slide. ओके, फाइन. अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के, दिस इज आर स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, इट इज़ वेरी haphazardly present. So if I take this section, okay, इस सेक्शन को अगर मैं लूँगी तो it will be yeah. So this itself has lot of circular areas present inside it. Okay, इसे हम क्या कहते हैं? These are called as plicae circulae. Okay, they are called as plicae circulae. Now, what is the function of plicae circulae? They are basically used to enlarge the surface area. Okay, see now we have lot of foldings here in small intestine. तो अगेन जैसे स्टमक में रूगे था, स्टमक में गैस्ट्रिक फोल्ड्स थे, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्लाइके सर्कुले होते हैं जो एरिया को एम्पलीफाई करते हैं. व्हाट इज एम्पलीफाई करना? एरिया को बड़ा करते हैं, एज वेल एज दे provide lot of what you can say, lot of surface area for absorbing water as well as the protein components which I told you earlier. So this again plays a very important role. Now somewhere we had seen here we had seen enterocytes. Enterocytes basically क्या है? अगर आप एंटेरो याद रखेंगे, एंटेरो इज योर what, the lower digestive system. Lower digestive system is called as enterosystem. Okay, so these cells which are present in your lower digestive systems are called as enterocytes. Okay, so enterocytes have two types of things, two types of enzymes. First is the glycoprotein and the second one is the mucin. अब mucin का काम क्या है?
कि म्यूसिन इज ए हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, ये आपको याद रखना है, इट इज ए हाइड्रोफिलिक कंपाउंड. ओके, सो द फंक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड विल बी व्हाट, कि सी, अब जो स्टमक का एपिथेलियम है या फिर जो इवन इंटेस्टाइन का एपिथेलियम है, दैट इज व्हाट, दैट इज ए वेट सरफेस. व्हाई इट इज ए वेट सरफेस? बिकॉज इट हैज म्यूकस. तो म्यूकस की प्रेजेंस की वजह से वो हमेशा वेट रहता है, इट इज नेवर ड्राई. तो जो वेट सरफेस है उसका भी होम्योस्टैसिस मेंटेन होना जरूरी है. ओके, फाइन. What is homeostasis? Homeostasis is maintaining water and temperature. Okay. If the temperature increases or decreases, then also we have issues. You people must be having the feeling that your stomach is burning. So what is that? That is your homeostasis is affected at that time. If you eat, आप कभी स्पाइसी खा लेते हैं, यू ईट टू मच, ओके, या फिर यू ईट वेरी सार स्टफ, एट टाइम्स यू ईट लॉट ऑफ नॉन वेज, so sometimes you feel that there is burning in your stomach for 2-3 days. So that is your homeostasis is affected at that time. Fine. So homeostasis को maintain करना mucin का काम होता है. So that is why we need mucin for digestion. Okay. Then next is there is Meissner's plexus. What is Meissner's plexus? अगर मैं surface cut करूँ of intestine, okay, so this is the outermost, that is serosa. Okay, this is the muscularis. Then we have what? We have the submucosa and then we have the mucosa. Okay, so जो outer layer होता है उसका हमेशा एक अलग टाइप का नर्व सप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं what? Myenteric supply. So myenteric supply जो रहता है वो those are basically thick vessels present. Okay, they are basically thick vessels which are present along the nerves. Fine. Then the submucosa part जो अभी हम बात कर रहे हैं, they have Meissner's plexus. Meissner's plexus बहुत thin vessels होते हैं. Okay, तो you people will get a question about this कि what would be the characteristic feature of Meissner's plexus. So Meissner's plexus have basically thin 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 network of nerve fibers. Okay, fine. Then there is this Brunner cells. These Brunner cells इसका काम ये होता है कि whenever food is going to enter what? Duodenum. Okay, तो जब फूड स्टमक से डिओडेनम की तरफ जाता है तो क्या सेक्रेट होता है? देयर इज सेक्रीशन ऑफ द पेप्सिन, ओके, एंड व्हाट? द गैस्ट्रिक एसिड. फाइन. तो जब ये सेक्रेट होता है तो इसके साथ साथ और एक एंजाइम सेक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्रेटिन. ओके, सो सेक्रेटिन को सेक्रेट करने वाला ग्लैंड है ब्रनर सेल. Inside what? Duodenum. This is present inside duodenum. You will get a question about the location of Brunner cell and also the function of Brunner cell. So the function of Brunner cell is what? That it secretes secretin when food enters duodenum from stomach and it is located in duodenum. Okay, fine. Now I'll come to the microvilli structures now. Yeah. सो अगर हम इनर लेयर देखेंगे ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओवरऑल पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है. ओके, इट इज़ नॉट स्ट्रेट सरफेस, सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ओके, अगर हम इस एक एरिया को एनलार्ज करके पढ़ेंगे सो दिस इज द वन एरिया. ओके, अब इसमें दो वेसल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है. फर्स्ट है the lacteal vessel. Okay, this is the lacteal vessel, lacteal. Okay, then lacteal के साथ साथ और एक vessel आता है which is what? Which is your blood vessel and it is present along both sides. Okay, so this is the blood vessel.
अब जब हम सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस पर क्या होता है, सरफेस हैज दिस कॉलमनार सेल्स, ओके, कॉलमनार सेल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट along the entire this area, okay, along with this columnar cells इस पर बहुत सारे विलेज होते हैं, विलेज एंड माइक्रोविलेज, okay, they are basically hair like structures which are present, okay. So these, the function of this will be that they will help in movement of the particles. Suppose if food is entering here, okay, और chyme is entering here, then उसको आगे push करने का काम ये माइक्रोविले करते हैं. Fine. How they do it? They always keep on moving. Okay. So that movement is going to facilitate that the food to move ahead. Okay. And when it is moving ahead, इसके साथ साथ वो absorption भी होता है. तो जो absorption का काम है, that is carried out by the lacteal vessel. Okay. Fine. Now next we have jejunum. Jejunum is the second part of small intestine. So jejunum का भी स्ट्रक्चर बेसिकली सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस कब आता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन पार्ट. सो यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब होने वाला है, यहाँ पर फैट कंटेंट एब्जॉर्ब होने वाला है. हम whatever fatty stuff we eat, or whatever contents which have more of fatty acids, all those will be absorbed at jejunum. Rest all layers, okay, these layers, see, the outermost serosa layer, the submucosa muscularis, all this will be same. Also the goblet cells will be also present. Goblet cells are going to secrete what? They are going to secrete mucus, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था. ओके, फाइन. और ये जो आप देख रहे हैं ऑर्बैक्स प्लेक्सिस, इसको हम माइंट्रिक प्लेक्सिस भी बोलते हैं. ओके, माइंट्रिक प्लेक्सिस वी हैड सीन रिसेंटली नाउ while studying. मैंने जो लेयर बनाया था उसमें जो फर्स्ट लेयर था, that was serosa, that is supplied by माइंट्रिक plexus or orbax plexus. Okay, fine. Next we have the last part of small intestine which is called as ileum. Okay, ileum का भी same होता है, सिर्फ there are few patches. I think I must be having the diagram of it. Yeah. Pairs patches are basically the patches which are important for recognizing कि absorption कहाँ होना है. See, अगर हम इलियम को पढ़ेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर पैचेस, दे आर दी पेयर्स पैचेस. सो हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो लास्ट स्टेज में एब्जॉर्ब होता है, दैट इज इन दी इलियम. सो दी सॉल्ट will be absorbed in this pairs patches. Okay, that's the speciality of ileum. Even आपको MCQ आएगा about this. Okay, so you need to remember pairs patches. Okay, then one more speciality ये है कि जैसे हमने पहले देखा था, we had seen stomach, we had seen duodenum, jejunum, they have 3-4 layers. Okay, जैसे वो सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, वो सब 3-4 लेयर होते हैं. बट जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे आता जाता है, व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स इलियम एंड देन दी व्हेन द कोलॉन इज अबाउट टू स्टार्ट, तब उसकी जो लाइनिंग है वो थिन होती जाती है. ओके, एंड प्लस उसके कॉन्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं बिकॉज ऑफ द लाइनिंग. जितनी मोटी लाइनिंग रहेगी उतने स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं, दैट स्ट्रॉन्गर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज. बट एज द लाइनिंग गेट्स थिनर, the peristaltic movement also decreases. Fine. So that is what is different in ileum, ki it has thin wall. Okay, that is why the contractions are very slow, and it has pairs patches. Fine. And bile salts वगैरह, all the salts are absorbed here along with vitamin B12. Fine. The last one is our large intestine. Large intestine again has same presenting, that is the layers. सिर्फ आपको याद रखना है कि it has this square like appearance. तो इस पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन. ओके,
Fine. This is the ascending colon. This is the descending colon. Okay. Why this is ascending? क्योंकि यहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है. सी आप इलियम देख रहे हैं, तो इलियम से the products are passed to the this part. So that is why it is called as ascending. यहाँ से वो it travels through the transverse colon and then it descends down towards anus or rectum. So that is why this is called as descending colon. Okay, fine. Now before the food or before the waste part products enter the ascending colon, it enters through this ileocecal valve. ये आपको याद रखना है. Okay. Then from here it travels आगे. अब इसकी कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जिनको हमने नाम दिए हैं. दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक फ्लेक्सर. दिस इज कॉल्ड एज स्प्लीनिक फ्लेक्सर. व्हाई? बिकॉज आपको अगर याद होगा तो here is our stomach present. Okay, fine. This is our stomach present. यहाँ से हमारा डिओडेनम स्टार्ट हो रहा था एंड डिओडेनम के यहाँ से हमारा क्या जा रहा था? पैंक्रिया. Okay, and here we have the spleen. So spleen is present here. That is why this is called as splenic flexor. Okay, this border of large intestine coincides with the wall of spleen. That is why it is called as splenic flexor. Okay, hepatic flexor. Why it is called hepatic flexor? Hepatic का नाम क्या हमें इंडिकेट करता है? लिवर. ओके, सो लिवर will be present here. Okay, so that is why the wall of liver is going to coincide with this area of the large intestine. That is why it is called as hepatic flexor. Okay, so बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में वही मैटर्स आता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, विच इज़ नॉट और विच इज़ नॉट नीडेड बाय आवर बॉडी. सो ओनली दैट प्रोडक्ट्स आर पुश टुवर्ड्स आर लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये होता है कि बेसिकली स्टोर्स द वेस्ट प्रोडक्ट. ओके, एंड जितना भी वाटर उसमें बचा है वो जितना एब्जॉर्ब कर सकता है उतना लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है. So the end stage water absorption, whatever is left in that kind or in that waste product, is entirely absorbed by the large intestine, and then the waste products are thrown out. Now there is something called as gastrocolic reflex. What is this gastrocolic reflex? Your large intestine has to contract always. Okay, so it contracts in a very rhythmic way. तो जब waste products are pushed from the small intestine towards the ascending colon, this itself starts contracting. Okay, it has to contract because it has to act against the gravity. Okay, so it is that contraction is stronger, so it is acting against the gravity because food has to move along the ascending tract, then pass this colon and then come down. This process is still easier. Coming down is easier, but moving against gravity is little tougher. So आपको याद रखना है कि ascending colon will always have a high gastrocolic reflex, or it is going to have stronger peristaltic movement compared to your descending colon. Okay, then अगर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन में we'll see the same thing, that it has these 4 layers. Okay, which we had seen earlier. Then it has goblet cells again, which are important for secreting what? Mucus. Okay, then there are these pits again जहाँ पर mucus store होता है, so they are called as crypts. Okay, that is the large intestine. Yes, doubts? Actually digestive system is very easy, so but still if you have any doubt then please let me know.
Any questions? Yes, students, any questions? कुछ भी डाउट नहीं है आज के क्लास में? सबको सब कुछ समझ में आ गया? यस मैम। Okay. अच्छा, ओके। तो हमको आपसे थोड़ा बात करनी है, तो मैम आप या पूछेंगे क्या? एक्चुअली हमने संडे को एक टेस्ट शेड्यूल किया था बायोलॉजी का ऑन नर्वस सिस्टम, बट हमने अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट एक्सपेक्ट एनी वन ऑफ यू देयर, सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू, टाइम का प्रॉब्लम है, डे का प्रॉब्लम है, बिकॉज आप में से किसी ने भी अटेंड नहीं किया वो टेस्ट। सो प्लीज़ लेट अस नो व्हाट इज़ द इशू, ताकि हम भी हमारी तरफ से इम्प्रूव करेंगे इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट। नहीं मैम, हमने किया था अटेंड। हमने भी किए थे मैम। संडे ओके। वाला सो टेस्ट। यस मैम, हमने यस किया था। मैम, किया था मैम। ओके, बट तो आई थिंक आपने सबमिट नहीं किया, ऐसा कुछ हाँ, हुआ है? नहीं, नहीं सबमिट मैम, भी ऑफ। नहीं मैम, सबमिट भी सबमिट किया नहीं था हमने। मैम, सबमिट हुआ था लेकिन उसका स्कोर नहीं दिखाया। हाँ, सब यस रॉन्ग मैम, था। हमने भी यही किया था। ओके। एक्चुअली हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है आपका, सो हाँ। दैट्स व्हाई वी आस्क्ड यू, बिकॉज व्हेन यू सबमिटेड हमको आपका रिस्पॉन्स आएगा विच वी हैवंट मैम रिसीव्ड। सबमिट किया था। सबमिट हुआ था मैम, लेकिन स्कोर नहीं आया था। यस ओके मैम। ओके। सो मैम, इसका मतलब क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि मैंने आज भी दोपहर में चेक किया, लेकिन कुछ भी एक भी रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। हाँ, इवन आई चेक, तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चेक किया, देयर इज नो रिस्पॉन्स। ठीक है, नो इश्यूज, हम देयर मस्ट बी सम टेक्निकल इशू, वी वर्क ऑन इट। ओके, बट हाउ वाज द टेस्ट, मतलब टेस्ट कैसे थे, क्वेश्चंस कैसे थे? अच्छे थे मैम। वर दे टू हार्ड और दे वर फाइन, लाइक यू ऑल कुड आंसर इट? इजी था, मतलब इजी था आपको सब, मतलब इजी लगे क्वेश्चंस, या फिर थोड़ा हार्ड था कोई कोई पोर्शन? आधे क्वेश्चन इजी थे, आधे क्वेश्चन हार्ड थे, ऐसा कुछ है? एवरेज थे मैम, एवरेज ओके। एवरेज थे। Average थे, ओके। okay, fine. So next Sunday also we'll keep a test and we'll make sure कि अभी जो technical issues हुए वो next time ना हो. So Sunday is comfortable time for you all. Sunday चलेगा? हाँ हम मैम। दूसरे दिन भी शिफ्ट कर सकते हैं, अगर कुछ टाइम हाँ, का इशू है yes, या फिर yes. कुछ भी प्रॉब्लम है तो। अगर संडे संडे को मोस्टली हम इवनिंग का ही टाइम लेंगे, 4 से 6 PM तक, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे ऐसा। तो ये टाइम आपको परफेक्ट है, मतलब आप मैनेज कर पाओगे तब तक, फोर टू हाँ सिक्स मैम। या फिर 5 PM को? ठीक है। I think it's comfortable for everyone. मैम ओके। टॉपिक कौन सा होगा? Sorry, वापस? टॉपिक टॉपिक कौन कौन सा सा होगा? रहेगा? Topic, we will try to keep little more complex topic now. Uh, बेसिकली नर्वस सिस्टम पे और एक बार फिर से लेंगे, देन वी विल सी, मतलब कोई और सब्जेक्ट में लेना है, जैसे फिजिक्स मोस्टली,
if ma'am is willing to take, then but हम आपको प्रायर बता देंगे. Okay? ओके मैम. Yes. ये तो आज के क्लास में कुछ डिफिकल्टी आई आपको? कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, पोर्शन कोई कुछ रिपीट करना है ऐसा कुछ है, या फिर सब पोर्शन आपको समझ में आया? यस मैम, सब समझ में आ गए. ओके. तो मुझे और एक बात पूछनी थी कि आधे से ज़्यादा लोग कॉलेज वाले हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, किसी का बीएससी शुरू है या फिर किसी का 12th शुरू है, तो मतलब अभी अप्रैल में आपका किसी का भी एग्जाम है, मतलब फाइनल एग्जाम्स है अभी पोस्टपोन अप्रैल हो में? गई मैम हमारी. पोस्टपोन हो गई हमारी. ओके. और 12th या बीएससी? मैम 12th. हमारी प्री बोर्ड एग्जाम है. ओके. प्री बोर्ड एग्जाम. ओके. कब है आपकी प्री बोर्ड? मैम 15 तारीख से है. 15 अप्रैल से? हाँ तो मैम. ऑनलाइन है या ऑफलाइन है आपके एग्जाम? मैम घर पे कॉपी देंगी, लिख के देना है. अच्छा. हाँ. ओके. ठीक है. सो वेन ये कब खत्म होगा आपका एग्जाम प्री बोर्ड? निकिता, आपकी प्री बोर्ड कब खत्म होगी? मैम 19 के दिन. अच्छा. ठीक है. सो 19 अप्रैल 3-4 से. डेज. ओके. फाइन. नो प्रॉब्लम. यानी किसी और को कुछ इशू है, एग्जाम है या फिर कॉलेज है, ऐसा कुछ है? ऑनलाइन क्लासेस है ऐसा कुछ है? हाँ. क्योंकि इवनिंग के टाइम पे मोस्टली सैटरडे संडे को हम मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे. कुछ इशू है टाइमिंग्स का या फिर कुछ और कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं आपके, कुछ और इशू है तो अभी बता दीजिए. क्योंकि जैसे ही आप लोगों के एग्जाम्स खत्म होंगे ना, तो हम चाहते हैं कि ये जो क्लासेस है ना वो दोपहर में शिफ्ट हो जाए, इसलिए हम पूछ रहे फाइन. आप लोग अब आपको जैसे ही पता चलेगा या फिर आपके क्लासेस वगैरह जैसे ही खत्म हो गए, सो प्लीज़ लेट अस नो ताकि हम टाइम टेबल और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें. हैं. हाँ. ओके. यस. आई थिंक वी कैन माइंड अप. किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं. हाँ, कोई पोर्शन अभी आज का कोई नहीं समझ में आए तो आप अभी पूछ सकते हो, मैम अभी है. आई थिंक मैम सबको अभी आज का पोर्शन समझ में आया है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम क्या? कल के लेक्चर में आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेंगे ये लोग. तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का क्लास. यस. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू. जय भीम.